Different ways, but same destination. Amen. Different battles, but same victory. Amen. The one on the Calvary. And we believe it. Amen. Amen. God bless you. We have different challenges. But what we just sang here, that God will put a song in your heart. A song of hope. Amen. That will, no matter what you are going through, in your soul, a song will be there to give you hope. Like David could sing in Psalm 23. Do you know that verse? Can Brother Donald catch it for us and read it, please? Psalm 23. See Brother Donald with his most unholy voice. That's a preacher, yeah? Yeah, he can bring it up to life. Amen. Praise the Lord. Amen. We're going to read the name of the Lord. Amen. Amen. Psalm 23. The Lord is my shepherd. Amen. I shall not want. Yes. He makes me lie down in green pastures. Amen. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Amen. He leads me in the path of righteousness Amen. for his name's sake. Yes. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yes. You Amen. prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me Amen. all the days of my life. Oh, And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. 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 Thank you. Thank you, brother. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your presence in this place. As we have just read, let this word be the song in our hearts. Amen. Whenever your people will come from different challenges and struggles of life, battles, problems, situations, Lord, may this rise in their hearts as a song. That as long as someone walketh with you, Lord, you shall not want, you shall not fear, because you are with us, Lord. Amen. Thank you for your presence here. Yes. No one has come into your presence and departed just the way they entered. We believe it, Lord. As we walk out of this place, we believe, Lord, you bless us. That you break some yokes, some chains. In Jesus' name. No matter what the plan of the devil, the evil one has on your people, but you have better plans. Amen. And these are the ones we choose to be part of, Lord. We have recognized in you a Savior, a provider. Amen. We call you El Shaddai. Amen. Thank you, Jesus, for you provide for your people in all needs and wants. Amen. In Jesus' name, we have humbly prayed. Amen. Amen. God bless you. Sit down. Amen. This is a song on the heart of David. The Lord is my shepherd. Is he your shepherd? Amen. Yes. Yeah. I want to hear louder. Is he your shepherd? Amen. Yes. The Lord is my shepherd. Amen. It's a wonderful thing to have him as your shepherd. Yes, some of us have experienced so much grace, Amen. Amen. and we're so ever grateful to the Lord Amen. for his grace. Amen. Because how can we explain everything he's done for us? Dying for us. Maybe we think it's just a story,
But it's not just a story. Amen. It's true. Amen. Maybe we just sing Amazing Grace, and song number 2, and then the brothers will come. Page 1, song number 2. Can you sing with us? Open your mouth. Don't worry about your voice. Just sing. If you know about grace. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did the grace appear, day I first believed. Through many dangers, toils and snares, I had already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Amen. Amen. Even then, we will still sing His praises Amen. every days of our life, Amen. even into eternity. Amen. We still remember how it was, how the Lord had been merciful to us, Amen. how when nobody could see any hope in you, the Lord saw something. Amen. When you had no idea of how to continue, but the Lord saw the way in front. When your enemies had already planned your end, and they have put traps on your way, on your path, but the Lord saw you out of it, and you are still standing there, Amen. and the enemy does not know how. Only one person knows how, it's you. You can sing it, you Amen. can testify it. Amen. It is the Lord, Amen. it is my Savior. Amen. God bless you all, beloved. You see, in the book of Jude, Jude starts by saying that we have a common salvation. Yeah, we have this common salvation. That's why we gather here, to talk about our common salvation. We all have gone through the same blood. We all have the same hope, the same promise. That's why we are here. That's why we call each other brothers, sisters. Amen. That's why we do not hate. We do not
envy. We do not have jealousy. We do Amen. not have hatred. Amen. That's why we always forgive Yes. and forget, Amen. Amen. because we are brothers and sisters. Amen. If you have this revelation, then you belong to God. Amen. If you haven't got it, pray some more, Yes. and the Lord shall open your spiritual eyes. Amen. God bless you. Let's pray for the word. Stand on your feet and we pray for the word. Heavenly Father, we thank you for your presence. We thank you for this opportunity again, for you to save a soul again, for you, Lord, to deliver us from anything that is still holding us back, anything that is slowing us down to fulfill your will, to be just as you have seen us in perfection. Lord, we thank you for your presence. We thank you for all the brethren you have brought in here today, and for the heart that came prepared to worship you and hear your will. Lord, we thank you for your servants in our midst, Lord, Amen. that you may speak unto our souls through their lips, Lord. Yes. Anoint them Amen. and anoint our ears, Amen. so that when, Lord, your voice will utter your will from their lips, we may feel life and receive it, Amen. not as words coming from a man, but from God. Amen. Lord, thank you. As we believe that within this word there is life, let everyone depart from this place with a portion of life. Amen. In Jesus' name, we stand against the devil and his plan. We stand against unbelief. Lord, in this place we declare love. We declare the Holy Spirit. Your presence fill our heart, Lord. That we listen in simplicity, humility, and fear of your name. Amen. That no evil thoughts, no distraction shall be in our midst from this moment on. In Jesus' name. Those that came not feeling so well within their body, Lord, may your precious blood cover them. Amen. That they receive healing in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God bless you, beloved. We have our brother Jaswinta and brother Emmanuel in our midst today, and I call them forward. And brother Jaswinta came with the sister and our young sister as well. Amen. They are wonderful people, Amen. and you know them. They are not visitors, they are family already. Amen. So you all know, you hear us, me and Brother Donna, every time, every week. Maybe you even think, oh, it's them again. Who knows? Amen. But today we are blessed to have visitors. Amen. You know, we always, in working together, we have two wings. We have one wing that is online and one here. So when you don't see them here, they're working online Amen. for our brethren that are all over the world that listen to the same message of the end time. God bless you, and Brother Emmanuel and Brother Jaswinta will come, and then Brother Emmanuel will know how they organize the time they have. Amen. Come Amen. forth, beloved. Come. Okay, we have it in two ways. God bless you, brother. Welcome. Thank you. Yeah, so Brother Emmanuel is gonna translate for you. And if Brother Emmanuel want to carry on, maybe after him, Brother Donna will have you. God bless you. सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम कहता हूँ। I greet all brothers and sisters in the name of Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. तकरीबन बहुत सारे आप मुझसे जानते हैं आप मुझे Many of you know me and you are aware. और
मैं भाई सैम का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। And I'm thankful and grateful to Brother Sam who has allowed me to be here at this time. और मेरा ये दूसरा विजिट है इस कलीसिया में। In this congregation, this is my second visit in a way. और जैसा भाई ने बताया कि हम एक ही फैमिली हैं। As the brother has just mentioned that we are one family. Amen. लेकिन हम जो पैदा हुए हैं वो अलग अलग देशों में पैदा हुए हैं। When we were born humanly in this world, we were born in different locations. तो जब हम पैदा हुए हैं तो अलग रिलीजन में पैदा हुए हैं, कल्चर में पैदा हुए हैं अलग अलग। We come out from various cultures and various regions. इसी कारण आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें हमारी मेल नहीं खाती होंगी। There are very few things where they look different amongst us. लेकिन हम फिर भी एक फैमिली हैं। But yet we are one family. क्योंकि सांसारिक तौर पर हम अलग अलग पिता पेरेंट्स से पैदा हुए हैं। We have been born by different human parents. लेकिन जब हम इस सांसारिक तौर पर मर गए और आत्मिक तौर पर पैदा हुए, When we are born to this world, when we are dead to this world and been born again spiritually, तो स्पिरिचुअली हमारा जो है वो एक ही पिता है। then we have one spiritual father. Amen. और अब हम जो हैं एक ही पिता की औलाद हैं। And now we are the children and offspring of one father. और ये सारा कुछ हो सका है इस पवित्र बाइबल के कारण। And this all has been made possible by this holy word of God. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बाइबल जो है इस वक्त मेरे हाथ में ये बंद है। And now you see that the Bible I am holding, this book, Bible I am holding, is a closed book. और इसको खोलने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। I need somebody's help to open this book for me. और जो मैं खोलने की बात कर रहा हूँ ये वाला खोलना नहीं है कि हाथ से खोल दिया। And this is just not opening flipping through the pages of a book. तो ये बाइबल तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है। There many of people are in possession of the same Bible. लेकिन ये जो किताब है ये भेदों से भरी हुई किताब है। But this book is full of many mysteries. यहाँ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये पूरी भेदों से भरी From हुई है। Genesis to Revelation, this is full of many mysteries. और जब इसको हम खोलना चाहते हैं तो हम खोल नहीं पाते। And when we want to open up those mysteries for us, we can't do it ourselves. तो हमें मदद चाहिए जो हमें इस किताब को खोल के दे। Now we need some helper who would open this for us. पर कहाँ जाएं? Where do we go? किस चर्च में जाएं? Which church we go to? और किस पास्टर के पास जाएं? And to which pastor we go to? जो हमें ये किताब को खोल के दे। Who will open this book for us? तो हम तो पढ़ रहे हैं कि उत्पत्ति में प्रभु ने सृष्टि को बनाया। And we read that the Lord God created. In the book of Genesis, we read that He created the world. वहाँ एक पेड़ लगे थे, अच्छा बुरा का पेड़ लगा हुआ था। There were many trees there. और वहाँ पर हवा ने बुरे का फल खाया। And there was a tree, so-called tree of good and evil, and Eve ate from that tree. और वहाँ सेब लगा था, बहुत दिखने में सुंदर था। And it was also told to us that there was a very attractive fruit, something like apple. हवा ने खाया वो। And the woman ate that fruit. और प्रभु ने कहा कि मैं तेरे वंश में और इस आदम के वंश में बैर उत्पन्न And करूंगा। subsequently, when all that happened, it says in the scripture that I will put enmity between your seed and that seed of the evil one. उसके बाद दानियल की किताब हम देखते हैं। Then we go back to the book of Daniel. फिर देखते हैं कि मरियम के द्वारा यीशु आया। And then we come, the Lord came when Mary conceived और उसके बाद the word of God. पवित्र आत्मा आता है, गैर भाषा बोलती है। And then we know that the Holy Spirit descends and Holy Spirit comes when the church begins. और प्रकाशित वाक्य को तो कोई छूता ही नहीं था। And then there is a book of Revelation, the last book in the Bible. Nobody would dare touch that book. बट सभी के अलग अलग डॉक्ट्रिन थे। But everybody carried different teachings and different तो फिर हम directions. कहाँ जाएं? Where do we go to find the right one? तो हमें लगा कि मूसा ने लिखी हैं 5 किताबें। But we came to know that Moses had written फिर उसके 5 बाद books. चेलों ने भी लिखी हैं। Then there were letters and gospels written by apostles and disciples. लेकिन उनके पास भी नहीं जा सकते
We can't go back to them. मूसा तो है नहीं, Moses is not present here today. ना पुलूस है ना पतरस है, We don't have apostles and Paulus and Peter here right now physically. पर कौन था जो यहाँ तक हमें लीड कर रहा है? But who has been leading us unto this place now? कोई था जो हमें लीड कर रहा था, There has been someone who's been leading us. कोई था जो हमारे हृदय को जानता था। There was been someone who knows our heart, our condition. दुनिया के किसी और कोने में हम पैदा हुए, And we were born in some different corners of this world. लेकिन वो जानता था, But he knew us well. वो दिलों को जानता है। He knew our hearts well. उसने पता था कि अब्राहम जो था, मैं उसे कहूँगा वो निकल आएगा। And he knew that earlier, before knowledge, he knew that I will call a man called Abraham and he will come out. वो रचेता है हर चीज का, Because God is the creator of all things. और उसे पता है हर चीज के बारे में, And he knows about all things. इसीलिए उसे उत्पत्ति से पहले उसका अंत का पता था। That's why he knew the end from the beginning. इसी तरह उसे हमारा भी सभी का पता था, That's why he knows about all of us. और उसे पता था कि ये जो है ये बाहर निकल के आएगा। And he knew by his foreknowledge that this particular person will come out. इसीलिए बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। That's why many have been called, but there are very few who are the elect. लेकिन जो चुने हुए होते हैं वो पहले प्रभु की खोज करते हैं। But those who are elect, they obviously go and seek God first. इसीलिए प्रभु ने कहता है पहले मेरी खोज करो, ये संसार की चीजें मैं तुम्हारे पीछे लगा दूं। That's why God said that first you seek the kingdom of God and me, then all these things will be added to and given to you what you need. तो प्रभु हमें ये अगुवाई कर रहा था कि ये सारा पवित्र शास्त्र जो है वो प्रभु के दासों ने प्रेरित आत्मा के द्वारा लिखा है। That God gave us this understanding that all the scriptures are is not humanly written, they were inspired by the Holy Ghost and they wrote this. तो हमें इस किताब के मालिक को ढूंढना है। So we have to find the author of this book. तो मूसा तो मालिक नहीं है, Moses is not the author of this book. न पतरस न पौलुस ये मालिक Neither नहीं। of the apostles are the authors of this book. तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा से लेकर सभी का चेलों का कि प्रभु के दास, They were all the servants of God. जिस तरह इस कलीसिया का नाम भी जो है वो है क्राइस्ट सेंट, Like we are called as Christ saints. क्राइस्ट सेंट। Amen. Now we are the saints So sent who is by honored? Christ. Amen. Who is honor? So who is the author? Who is the owner? Christ is the honor. Christ is the owner. तो मूसा का अपना प्रकाश नहीं था, This was not the revelation or teaching or direction coming from Moses, his own. No. पौलुस पतरस का अपना It रेवलेशन was नहीं था। not from apostles their own. तो प्रभु ने कहा है मेरी और मनुष्यों के बीच में आसमान और जमीन का अंतर है। The Lord said there is a vast difference, a vast gap between the understanding which is human and which is scriptural. तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने अपना सारा कलाम अपने चेलों को दिया। That's why God revealed His word through His prophets and the apostles. तो हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे परमेश्वर थे। We already had so many gods. तो हमें जब हम प्रभु ने हमारी अगुवाई की इस कलाम की ओर, When God led us into the तो scripture. हमने देखा कि यहोवा जो है वो सबसे बड़ा है। When we came to know Jehovah God is the highest. यहोवा बहुत पावरफुल है, वो सबसे बड़ा है। He's almighty and all sufficient and all powerful. तो उसके वो जो है वो उसके पास पुत्र था, उसने भेज दिया। And He manifested Himself in His Son. तो उसके बाद जब पुत्र स्लीप पे चला गया तो उसने पवित्र आत्मा भेज दिया। And when His Son, in whom He was manifested, completed the job, then He sent His form of Holy Ghost to us. लेकिन जब हम 10 नियम पढ़ते हैं प्रभु के 10 हुक्म, But when we read through those 10 commandments of God, तो हमने देखा कि सबसे पहले नंबर पर जो प्रभु ने हुक्म रखा है and we know the very first commandment the Lord gave, कि मैं सच्चा और जीवता एक He परमेश्वर हूं। said, I am one God. And besides me, there is no other God. तो प्रभु ने इसे पहले नंबर पर क्यों रखा? Why did God prefer it and put it on the top priority as number 1? 10वें पे क्यों नहीं रखा? Why it was not placed in the priority of 10th? तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रभु के लिए ये जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। That's why we know how important it is to know that there is one God, besides Him there is none. Amen. तो हमें मददगार की जरूरत थी। We needed somebody to tell us this. बिना मददगार से हम ये कुछ नहीं We समझ could do सकते। nothing on this book ourselves. ये आज भी बहुत सारे लोगों के लिए बंद है। This book is a closed book
for most of the world. मार्केट से खरीद लेना, ले लेना, ये कोई भी कर To सकता है। have and possess a Bible and Bibles and buy it from the shops, this anybody can do. और कोई भी इसको खोल के पढ़ सकता है। And if we can read it and open it like any book, लेकिन इसको समझाना जो है वो हर किसी के बस का काम नहीं but it है। is not everyone's business, not everyone's reach to understand this book. तो ये इस तरह है जैसा हम सभी स्कूल जाते हैं, As if we go to schools to study तो हम स्कूल की किताबें खरीदते हैं, and we buy the curriculum books, लेकिन क्या हम घर बैठ के उनको पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं? but can we just read them sitting at home and qualify and pass all the exams? तो उसके लिए हमें टीचर की जरूरत होती है। We need somebody to teach. तो वो टीचर हमें क्या करता है? Then teacher, what does he do for us? हम मैथ की किताब लेकर मैथ सीखे, If we take the maths book and sit with the maths book, हम साइंस की किताब खरीद के साइंस likewise सीखे, if we do with the science book, तो हमें उसके टीचर की जरूरत है। we need somebody to teach that subject. हमें बाइबल के टीचर की, We need somebody to teach us this book. अब टीचर कौन है? Who is that teacher? पवित्र आत्मा जो है वो हमारा टीचर है। Holy Spirit. Bible says Holy Spirit is our teacher. बिना पवित्र आत्मा से आप इसे नहीं समझ सकते। Without Holy Spirit, Holy Ghost, we cannot understand this book. तो वो पवित्र आत्मा मिलता कैसे? How do we get that Holy Ghost? पवित्र आत्मा है क्या? Who is that Holy Ghost? तो सबसे पहले तो हमें उसके आगे सरेंडर होना होता है। First of all, we have to empty ourselves and give a full surrender to receive that. तो क्लास में भी टीचर सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है। Now the same teacher, one teacher teaches many students in the same class. लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनमें से कोई फर्स्ट आया होता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड। But all are learning from the same teacher, but the result is different for every student. Yes. कोई फेल भी होता है। There are some who even fail. तो टीचर ने जो फर्स्ट आया था उसे अलग से नहीं पढ़ाया था। The one who stood first was never specially taught by the same teacher. They were all taught in the same manner. जो फेल हुआ उसको भी उसने अलग से नहीं पढ़ाया The था। one who did not qualify and failed, he was also taught by the same teacher in the same manner. तो फिर भी कोई फेल हो गया, कोई फर्स्ट आ गया। But why different results? टीचर सेम। Teacher Amen. is the same. Amen. तो कुछ रैप्चर पा जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। There will be some who would qualify for rapture and some will be left behind. Amen. The same God, From the same God, same Bible। same Bible for all. फर्क क्या? What is the difference then? रेवलेशन। It is the revelation that is important. जिस तरह हमारे भाई सैम ने अभी बोला As our brother had just said, कि अगर आपके पास रेवलेशन है if we have the revelation, तो आप भी इसके मेंबर हैं। then we are the member of this family. Amen. अब जब रेवलेशन आता है When revelation comes, तो चीजें परत बाय परत खुलनी शुरू हो then जाती है। layer by layer the things get revealed. जब आप प्रभु आपको सबसे पहले गॉड हेड समझाता है। First of all, God brings us to His first commandment about the Godhead. तो सबसे हम प्रभु के आगे सरेंडर होते हैं Then we surrender our own will to understand that, Amen. और पूरे हृदय से। and with all our heart. उसने ये नहीं बोला 50% ले आओ, 99% लाओ। He didn't say that come and dedicate yourself with a percentage. तो कहता है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? चीला कहता है। Then what is the greatest law? वो कहता पूरा, I need full 100% dedication. पूरी जान, With all your heart, with all your सब mind, कुछ, with all your पूरा, soul. सब कुछ पूरा, Everything should be all. सब सरेंडर कर दो। All need to be surrendered. जो सरेंडर कर देते हैं, Those who surrender, that's why पौलुस कहता है मैं That- प्रभु का कैदी हूँ। that's why Paul says that I am a prisoner of the Lord. कैदी कौन होते हैं? Who is a prisoner? जिनको जो अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं They सकते। can do nothing with their own will, though they are prisoners. ये नहीं कह सकते आज हम 11 बजे उठेंगे। And we just cannot say, I will get up at 11 a.m. जेलर कहेगा 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठाओ। If the jailer says, the owner of the prison says, you must get up at 7, I will have to get up at 7. तो इसी तरह जो लोग समर्पित हो जाते हैं वो प्रभु के कैदी होते That's हैं। why those who are surrendering to the Lord,
they become the prisoners. फिर वो for the अपनी Lord. मर्जी नहीं कर सकते। Then it is not their will which persists. हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हम लंदन नहीं We आना। cannot say by our own will that we want to go there or we want to तो come प्रभु ने here. कहा ये आना है तो आना है, The Lord said, if you have to be here, you have to be here. क्योंकि प्रभु हमारा मालिक है। Because He owns us. तो प्रभु ने हमें अगुवाई की इस कलाम तक लाने की, Then He had led us that we must come to His word. पर ये इतना आसान नहीं होगा। But it was not so easy. सब कुछ आसान है संसार में, In everything in this world is easier than this. परंतु प्रभु के पास आना सबसे मुश्किल है। This is the hardest thing to come to the word. बहुत सारे आपको समझाने आएंगे, Many come to teach us. पर वो प्रभु ने कहा जिसको मैं पकड़ लूं मेरे हाथ से कौन छीन सकता है। But then the Lord Himself said, whom I am holding, whom I am calling, and I am drawing, who can take him away from me? आमीन। Amen. तो प्रभु ने हमें पकड़ा, So the Lord is holding us. इतनी सारी रुकावटें थी। There's been so many obstacles in our different lives. देखिए परिवारों की, संस्थाओं की, धर्मों की, Connected with families, institutions, and societies and religions. फिर भी देखिए हम प्रभु में हैं। Why? But hallelujah, we are yet in the Lord. आमीन। Amen. Amen. प्रभु सामर्थी है। Lord is all powerful. Amen. तो प्रभु ने हमारी अगुवाई की, And the Lord has led us. प्रभु ने हमारी समझ खोली। The Lord has opened our understanding. चेलों के पास प्रभु था, Apostles had Christ with them. वो सारा दिन प्रभु से कलाम They लेते were थे, all moving around having fellowship day and night with the same Lord. लेकिन प्रभु ने उनकी पवित्र शास्त्र को समझने के लिए समझ खोली। But Lord had to open their understanding to understand who the Lord is. प्रभु ने खोली तब जाके उनकी समझ खुली। Not their being with the Lord physically, but spiritually Lord opened their understanding. नहीं तो वो सालों साल तक लगे रहते, वो ना समझते थे। Otherwise, all this time they would never understanding who is with them. तो आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास समझ नहीं खुली। There are many people who are in the same train. They don't understand who the Lord is. तो इतनी सारी संस्थाओं में प्रभु ने हमको ये प्रकाशन दिया है। Now Lord has given us and blessed us with this revelation coming from various institutions. तो प्रभु का हम कितने ज्यादा शुक्रगुजार हैं। How much grateful we ought to be for our Lord. क्या प्रभु ने आपके ऊपर सिर्फ एक टॉपिक खोला है? Has the Lord opened only one subject? क्या प्रभु ने आपके ऊपर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खोल दिया? Or have the Lord been kind so that we can understand from Genesis to Revelation? क्या आज ये सारी किताब आपके आगे खुली नहीं हुई है? Is this book an open book for us today? आज आप कहते हैं यहाँ से मर्जी खोल लो, हम आपको बता देंगे। And today can we say to anyone who asks us a question, we open this book from anywhere, I will get the leading of the Holy Ghost and I will be able to. आमीन। Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God for ते that. प्रभु की महिमा हो। May the Lord be glorified in all things. और प्रभु परमेश्वर ने हमें गॉड हेड क्लियर किया। God, He made the Godhead very clear for us who God is. आज हमारे को 99% क्लियर नहीं है बाइबल। Now, 99% people in this world are not clear about this Bible. परंतु प्रभु ने हमें ये सारा 100% क्लियर करके But God is a God of 100%. Amen. और प्रभु परमेश्वर ने हमें सारा क्लियर किया किस तरह वो पुराने नियम में पिता था। And He has cleared it how He was, who He was in the Old Testament. और नए नियम में वही देखिए देदारी हुआ And He was manifested in His Son in the New और Testament. आज वही प्रभु हमारे बीच में पूरी And तरह today, under the dispensation of the Holy Ghost, He is inside us. वही वचन जो था वो देदारी हुआ The Word was God, which was in the beginning, the Word was made flesh for us. और आज वही देखिए पवित्र आत्मा के रूप में हम सभी के साथ The कार्य same करता है Word is in us as the Holy Ghost. और वही हमें तैयारी दे रहा है And the same Holy Ghost is preparing us. और उसने ही हमें ऐसे शिक्षक दिए जो पवित्र आत्मा पाए हुए And He थे has given us those teachers who are filled with the Holy Ghost. Amen. और जब हमको भी वही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा And था the same Holy Ghost which led them will lead us, then we understand. तो हम वहाँ तो हमारे वही पवित्र आत्मा ने हमें आनंद से भर दिया And the same Holy Ghost has given us
His peace and understanding तो हम- and happiness, हम जो है आशीष से भर गया हमारा दिन। then we are full with the blessings of God. Amen. और देखिए उसके अनुग्रह से हम अब रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं। By His grace only, now we are able to prepare for His return. सारा संसार देखिए आज भी घूम रहा है इस संसारिक चीजों के The पीछे, whole world is going around in the worldly affairs, और हम जो है ऊपर की तैयारी कर रहे हैं। and we are preparing for heavenly things. लोग चिंता में हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या बनेंगे। People are planning and making strategies and worried what will their children do, what is their future, what will happen to them and their families, घर लेंगे, घर का क्या होगा, जॉब का क्या होगा। what will happen to their housing and rent and jobs. एक हम ही हैं जिन्हें कि इस चीज की कोई चिंता नहीं है। But there are who are the chosen ones, they are not worried especially for these things. जो ये तो प्रभु कहता तुम्हारे पीछे होंगे। Lord says these things will follow. Amen. तो हम तो पता है ये सब कुछ हम छोड़ने जा रहे हैं। So we want to leave these things behind and move ahead, then these things will automatically follow. Amen. आप सभी की गाड़ियां किसी और ने चलानी है। And our cars are, these cars that we have, once we are gone, somebody else will be driving these cars. Yes. हालेलुया। Hallelujah. हमारी महंगी महंगी गाड़ी को किसी और ने चलानी। All our things, all expensive things of the world, we are striving and working hard to achieve today. When we are gone, who will this belong to? Some people will drive it. Who cares? Amen. तो हम किसी और के लिए खरीद रहे हैं। So we are doing this for others. Yes. Yes. दिस इज द ट्रुथ। This is the truth. हालेलुया। Hallelujah. और ये बड़ी जल्दी होने जा रहा है। And this is going to happen very soon. Yes. ये नहीं है कि मेरी अगली से अगली जनरेशन है। It's not that I will see 3, 4, 5 generations and pass on these things to them. 2004 में मेरे साथ भाई फ्रैंक थे इंडिया में। And in 2004, when Brother Frank was there with us, तो हम कैपिटल से काफी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। we were going on a long drive from the capital of Punjab. तो भाई फ्रैंक कहते कोई सवाल है तो पूछो। And Brother Frank said, while we were on the driving journey, he said, if you guys have any questions, you can ask me. तो 2004 में तो आधी उम्र थी। And I was nearly half my age in 2004. तो उस वक्त यंग था। I was very, very young then. अपनी उम्र। I was still young, but that was younger. तो मैंने पूछा ब्रदर कि हम कितना आइडिया ले सकते हैं प्रभु की आमद का। And I just asked, how much can we guess that when is the Lord going to return? तो उन्होंने कहा ये सिंपल है कि तुम हो, तुम्हारी आगे जनरेशन हो सकती है। And he says, maybe it's in your generation, maybe the next generation to your generation. और ये नहीं है कि उनसे आगे की भी जनरेशन है। But it is not that there will be many, many generations ahead as the times are इतना where we इतना are. ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। We don't have that much time तो left. कितना आशीषित देखिए ये प्रकाशन है। Now you see how much blessing, how much great blessing it is to receive this revelation in our time. Amen. तो प्रभु ने जो हमारे को जरूरी है वो प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है। Whatever is needed for our salvation, Lord has already provided for us. Amen. हमारे पास अच्छा खाना है, We have good food physically also. अच्छा छत है, We have got a place to live. अच्छा पहनने को है। We can wear good clothes. अब क्या करना है हमें? Why do we need all things more and more? बस इस वचन के द्वारा हर रोज हमने शुद्ध होना है। We need to be sanctified by this word every day. वो क्या रह गया हमारे पास? What else is left for us now? अब क्या करना है? What do we need now? Why? हमें फिक्र नहीं है ना कि बच्चों को आगे हमने जो अगर पढ़ा होगा तो प्रभु करा देगा आगे। We are not worried about too much planning now. तो हमें तो सिर्फ ये है कि हम इस संसार में न रह जाए। We are living in this world, but we don't conform to this world. Yes. Amen. प्रभु प्रकाशन है। Lord Himself is the revelation for us. Amen. जो प्रभु ने जिनको ये रेवलेशन दिया है, Those who have been given this revelation by the Lord, तो प्रभु उनसे कितनी उम्मीद रखता है। then think what God expects from them. तो हमें कितनी इज्जत करनी है रेवलेशन। How much we need to respect this revelation that we have यहाँ received. बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, बड़ी हाई डिग्री वाले, There are many, many educated and learned people in this world. लेकिन वो नहीं जानते कि अंत में रह रहे हैं। They don't know what is going to happen.
लेकिन प्रभु ने अगर हमें दिया है But if Lord has revealed it to us, तो हमें बहुत ज्यादा सीरियस होने की how जरूरत much है। sincere and serious we need to be to value that. अब सोच के देखें, जब प्रभु कहेगा कि उन 5 मूर्खों को कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, And he says, when the Lord will say to the foolish people of this world, I don't even know you. वो नहीं है कि अनविश्वासी लोग हैं वो It is not that they don't want to believe or they don't call themselves believers. वो तो कहते तेरे नाम से, यानी वो प्रभु के लोग थे। The Lord says they will come and tell me, Lord, we have done these things in your name. तो वो रिजेक्ट हुए, But they will be rejected. तो इसलिए पौलुस कहता है हम धर्मियों का बहुत मुश्किल से उद्धार होगा। The तो Lord बाकियों का क्या says, होगा? those who call themselves righteous, how difficult it will be for them to be saved. प्रभु हमेशा से ईमानदार रहा, The Lord has always been faithful to us. उसने हमेशा से अपना पार्ट पूरा निभाया। He has done his part always for us. आप शुरू से देख लें, प्रभु ने सारी जिम्मेदारी निभाई है। The Lord has fulfilled all his promises for us and yet fulfilling. हमेशा हम मनुष्य ही फेल हुए हैं। But who has always failed? It is we. उसने the human ऐसा नहीं being. किया, मनुष्य बना दिया और बाद में उसके लिए घर छत बना रहा है। And he is not that the first he made a human being, a man, then now he is creating everything for him to live. उसने देखिए उसके लिए जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, फ्रूट बनाया, सब कुछ बन गया, फिर मनुष्य He बनाया। created everything for him to live and flourish and multiply, then only he made man. क्या उसने ये कहा सॉरी मैं ऑक्सीजन बनाना भूल गया तुम्हारे लिए? Then he said, after making man, sorry, I didn't make oxygen, how will you breathe? आप 2 मिनट सोच सकते हैं? Can we think about those basic things? नहीं। He He is didn't do that way. देखिए कितना संपूर्ण परमेश्वर है। He is the whole and complete God. तो फिर कौन हुआ? हम हुए। Who has failed? उसने कहा मैंने इकलौता पुत्र दे दिया, He says, I have given my begotten son. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, I have done my part. अब आपकी जिम्मेदारी है। The other verse says, जो now कोई भी- it is our responsibility. जो कोई भी- Whosoever. चाहे God वो has done his part, India- now whosoever. इंडिया का है चाहे किसी देश का है, Whosoever means from anywhere. जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा Whoever will be, whosoever will believe in उस him, पर what God दंड has की आज्ञा given, नहीं, they will not be condemned. वो पार हो चुका है मृत्यु से, He's already passed the valley of death वो हमेशा का जीवन पा चुका and है। he has found the eternal life. और प्रभु ने हमें देखिए मलाकी 4:5 भी दे दिया। And the Lord gave us the ministry according to Malachi chapter 4. बाकी सभी चर्चेस के लिए वो अभी भी बंद है। But that chapter, those verses, that scripture is still closed for many churches. बहुत सारे लोगों के लिए एलिया आया ही नहीं। For many of them, that Elijah, who we believe has already come for us, for this ministry, they don't know, they don't want to believe, they are ignorant about it. पर हमारे लिए तो एलिया आगे चला भी गया है। But for us, he came and he is gone. आमीन। Amen. क्या आप देख रहे हैं बिल्कुल वही हो रहा है पहली आमद जैसा। And do we not know that similar things are happening, how it happened in the first coming of the Lord? बहुत थोड़ों को पता चला था कि एलिया आ चुका है, Very few recognized that Elijah had already come. और जो एलिया की मिनिस्ट्री समझ पाए थे वही यीशु मसीह के पीछे चल पाए। And those who understood the ministry of that Elijah who came, who introduced Jesus Christ, only they could come to Jesus Christ. तो आज भी जो एलिया की मिनिस्ट्री समझ पाए हैं वही यीशु की आमद भी समझ पा रहे Even हैं। today in our time, the ministry of Elijah, who has been understood by some people, only they will know what that ministry says and what the message says. और प्रभु देखिए जुगो जुगो एक जैसा है। The Lord is all the time the same Lord. ये नहीं कि वो वाला और था अब वाला और है, It is not that he changed his mind and he was different then and different now. इसीलिए उसका काम करने का तरीका आज भी सेम है। That's why his pattern of work is the same as before. जिस तरह उसने मूसा के द्वारा सिर्फ अपने लोग गुलामी से बाहर निकाले, As he took out the people from bondage in the times of Moses, लेकिन वो देखिए वो दुनियावी गुलामी में थे they were in the physical bondage. और प्रभु ने मूसा के द्वारा निकाले, And God used a prophet to bring them out from the physical bondage. लेकिन योशुआ के द्वारा देखिए वो दाखिल हुए। But through the ministry of Joshua, through the work of Joshua, they entered the promised land. तो प्रभु ने हमारे साथ भी इस युग में ऐसा ही The किया। Lord has done similar things for us in this हम world. सब गुलामी में थे, We all have been in a bondage, लेकिन हम इस संसारिक गुलामी में नहीं थे। but not the physical bondage only. हम गलत शिक्षाओं की गुलामी We में। were in the bondage of the wrong teachings and wrong learnings. तो प्रभु ने हमारे लिए भी एक सेवकाई भेजी। Then he sent
He sent a service for us, a ministry for us. हम में से बहुत सारे अलग अलग शिक्षाओं में थे। We were all in diverse, different type of teachings and understanding. मेरा ईमान आपके साथ नहीं मिलता था। And we did not have the same faith together. हमारा आपस में एक दूसरे का ईमान नहीं मिलता था। We had disharmony. We did not agree with each other in our faith. तो प्रभु ने हमारे लिए एक सेवकाई भेजी। Then he brought one ministry for us in our town. उस सेवकाई के द्वारा हम सब जो थे एक छत के नीचे आए। Because of that ministry, we got into the same understanding and the same faith under the same roof. ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। This is not the work of a human being. Amen. तो ये प्रभु का काम है। This is the work of the Lord. आमीन। Amen. प्रभु आज भी काम कर रहा The है। Lord is working even now, even today. और देखिए प्रभु ने उस अपने कलाम के द्वारा प्रकाश के द्वारा मलाकी 4:5 हम पर प्रकट किया। The Lord has revealed His ministry for this time on us according to Malachi 4. और उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा हम सब आत्मिक गुलामी से बाहर निकल आए। And we have been taken out from our spiritual bondage of the wrong teachings and wrong understanding. We have come into the right understanding. So we've been relieved from the spiritual bondage. लेकिन हम देखिए जेरूशलम में एंटर नहीं हो पाए। We could not enter Jerusalem. तो इसका मतलब है हमें एक और मिनिस्ट्री की जरूरत थी। But then we needed a ministry. और प्रभु ने हम पर वो भी मिनिस्ट्री खोली। And then God gave us a ministry. मत्ती 24:45। The Matthew 24 and 45 to 47, that is the teaching ministry. तो उस टीचिंग मिनिस्ट्री से देखिए सारी पर्दे खुल गई हमारे आगे। And the things which were not even revealed, which were hidden for us, they had been revealed through the teaching given by the Holy Ghost. प्रभु एक एक पर मेहनत करता है। The Lord takes care of every small thing for us. Amen. हम सब पर उसने मेहनत की है। He is really working hard on us. तो अगर हम में से एक भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तो आप सोचें कि वो क्या करेगा फिर। But we will see what kind of condemnation and judgment we will bring upon us if we don't value that work which the Lord is doing. और देखिए उस मिनिस्ट्री के द्वारा हम प्रभु ने कुछ भी हमसे छिपाया नहीं है। And through that ministry, the Lord has revealed everything that we need for our salvation. जो गलतियां पीछे रह गई प्रभु ने वो भी ठीक The करवाया। errors which were left behind, He has even corrected them for us. कि हम ना तो भाई ब्रानम के पीछे चलने वाले बने ना भाई फ्रैंक के। We don't follow the men, neither Brother Branham nor Brother Frank. देखिए चाहे वो गॉड हेड से निकल आए, ट्रिनिटी से निकल आए, Although they came out from Trinity, from the other wrong teachings, फिर भी देखिए कुछ गलतियां छोड़ रह गई। but then everybody was human. There can be flaws in everybody. लेकिन प्रभु ने देखिए वो गलतियां भी हम में ठीक की। And many of us have been corrected even those things which were carried by many people before us. Yes. तो वो हम नहीं कहते भाई फ्रैंक ने कहा, भाई फ्रैंक ने कहा। We don't repeat the words Brother Frank said, Brother Frank said. Amen. हम कहते हैं प्रभु यीशु ने कहा। We just say the Lord said, the Lord said. Amen. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। May the Lord be praised. और देखिए उसने सेवक चुने, And he chose his servants वो अपनी सेवा लेता है। and he does his service. जब समय पूरा हो जाता है वो अपने सेवकों को ले जाता है। And when the time is up for them, he calls them home. तो इसी तरह उसने हमारे भाई की भी सेवा को लिया और ले गया। He put our brother, dear Brother Frank, in the service, and when he rendered the service and he did it well, he called him home. अब मलाकी 4:5 भी पूरा हो गया है। And the Malachi 4 is also complete, we know that. मत्ती 24:45 Matthew 24 part is also complete. अब आगे क्या बचा है? What is left now? ये सवाल है। This is a question for us. आगे रैप्चर है। Now, the only thing which is left for us to go from here. Amen. प्रभु ने ये नहीं कहा था कि तुम मूसा के पीछे चलते रहना। He never said you continue to follow Moses. प्रभु ने कहा था इस अर्क के पीछे, कोविनेंट के पीछे He चलना। says, go to that covenant that I have done with you. तो प्रभु ने उस दास के द्वारा सारा खाना हमें दे दिया है। The Lord used the servant so that the spiritual food could be given out to us. सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, किताबों में बहुत मात्रा में पढ़ा है। Through the whole media, we receive this food. हमने उसे खाते रहना।
We have to keep on nourishing on this food. ये रोज का काम है, This is for every day. रोज ही शुद्ध होते रहना है। And we need to be purified and sanctified on daily basis. ये नहीं है वो पानी जो था उससे हम बस शुद्ध हो गए, अब तो It ठीक is है। not that we went into the baptistry, we went into the water and then we became holy. ये वचन जो है ये पवित्र है। It is this word which is washing us and making us holy. प्रभु यीशु ने कहा, ये पिता इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर। And the Lord said that sanctify them by your word, because your word is the truth. और तेरा कलाम ही जो है सत्य है। Because the word of God is the truth. अब जो हम ये वचन जो सुन रहे हैं, The word which we are just now meditating upon, ये क्या कर रहा है? what is this doing? ये हमें धो रहा है। This is washing us, cleaning us. आमीन। Amen. और इसी तरह जो तैयार होंगी Likewise, those who will be ready in this process, वो ले जाएंगे। they will be taken. वो एक साल नहीं लेगा, And then साल नहीं लेगा एक पूरा। it will not take a long year to do this. वो कहता पलक झपकते ही होगा। It will go in twinkling of an eye. Amen. सारे संसार में एक समय पे होगा। And all over the world, whether you are up, down, north or south, all over it will be in twinkling of an eye. अब सोच के देखिए, जब भी हम ये शरीर बदलेंगे, And think about this when this body will be changed. उसी वक्त ये सारी संसार की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। We will get rid of all the problems of this world. जो भी बिल देने हैं, जो भी चिंताएं, All उसी the वक्त- stresses, all the accounting, all the sickness, all the worries will be over right then in twinkling of an eye. और जो फीलिंग्स भी खत्म हो जानी है। And all संसार those पे। feelings we have got now which are bothering us will be also away. और देखिए प्रभु ने मृत्यु भी खत्म कर दी। And then he removed the death, he overcame death on the Calvary. जिस तरह वो युग युग है, वो हमें भी युग युग Like as he is for all times, we will also be for all और times, सोच- unto eternity. और सोच के देखें फिर युग हमेशा से प्रभु के साथ रहना है। And then we have to live with the Lord for eternity. और ये सभी को मौका नहीं मिलेगा, And all will not get this chance. जो चुने हुए हैं। Those who are elect, वो इसीलिए शरीरों को नहीं देखता, दिलों को देखता। that's why he doesn't look at the type of our body, the size of our body. No, he looks at our heart. हालांकि मैंने देखिए एक लंबी सेवकाई की है इंडिया में, Like I have been in the service ministry for quite many years in India, और एक बड़ी कलीसिया रही है मेरे पास। and then I have been able to, by God's grace, I was given a chance to serve a large congregation in India. लेकिन फिर भी मैं गलत था, Then I was still wrong, और मैं ब्राह्मणमाइट था, and I was is a type of cult which is called Branhamite today. और मुझे लगता था कि अब मेरे पास सब कुछ सही है। And I was thinking, I have a big congregation, I'm the pastor of a congregation, I'm self-sufficient, I'm happy, I'm contented. लेकिन फिर भी पूरा प्रकाशन नहीं था। But I did not have the full revelation. तो प्रभु ने मुझे 2016 में फिर से करेक्ट किया, And then Lord corrected me in 2016. और प्रभु ने दोबारा से सारी चीजों की शुरुआत की। And then the Lord made a new beginning in my life. दोबारा से नींव रखी, हर पूरी तरह से A new foundation, layer by layer, was laid in my life. और देखिए प्रभु का अनुग्रह, जो जीरो से प्रभु ने दोबारा से मिनिस्ट्री खड़ी की। And then the Lord again raised up that ministry which was dead. और प्रभु ने सारे इस जगहों से चुने हुए अपने बच्चे इकट्ठे किए, And the Lord brought about people, the children from various directions. अब वहाँ पर देखिए एक सही कलीसिया चल रही Now है। in that area where I used to, city I come from in India, now there is a congregation which is already doing well by grace of God. जो कि इसी कलीसिया का हिस्सा है, And that is the part of the same congregation we are here in. और सेम फेथ है, सेम बिलीव है। We are with the same faith, and the same spirit, and the same truth, and the same word. देखिए ये प्रभु कितना सामर्थी प्रभु है, This is the power of God. इनकी ईमान रखने की जरूरत है। We need to believe this. मैं बचपन से कोई मसीह नहीं था, I was not a Christian since my birth, और मैं एक मिलियंस बिलियंस गॉडों को मानने वाला and इंसान I was a worship of millions of gods, like in India. और प्रभु ने देखिए मुझे इस्तेमाल किया, And God used me and brought me out. वो किसी को भी कर सकता है। He can use anyone. Amen. तो प्रभु का धन्यवाद हो। We thank God for this, तो Amen. मैं भाई को ही समा दूंगा, and now we will continue for a short while. और भाई मैनुअली आगे कंटिन्यू करेंगे।
And the brother will say a few words now. हाँ, प्रभु आप सबको आशीष दे। Amen. May the Lord bless you. Amen. Thank you, Amen. brother. God bless you. Amen. Brother John. Thank you. You will say a few words, then you will be able to translate it, right? No? Yeah. We're just continuing on the things. Thank you, Brother Jaswinder, and we thank God for what we heard through our brother. Now this is for the benefit of certain brothers and sisters here who would understand French better. So for the benefit of them, brethren, we are not presenting a new thought. We are not presenting new scripture. Whatever brother said, we continue. Because whatever he said, Et tout ce qu'il a dit. He continued what Brother Sam said. Et il continue à ce que le frère Sam disait. And we all continue. Et nous continuons tous. What God says in His Word. Et que ce que Dieu dit dans sa parole. We don't bring a new preaching. Nous n'amenons pas new une faith, prédication, or new cult, foi, or new denomination. Dénomination. We are believer of one God. Nous sommes croyants d'un seul Dieu. A God Elohim. Dieu Elohim. Who was from eternity. Qui était dans l'éternité. For our sake. Pour nous. He left eternity. Il a laissé l'éternité. And He manifested Himself into time dimension. Lui-même dans les temps, dans la dimension du temps. Elohim, the one which plurality of attributes, not plurality of persons. L'attribut, non pas l'attribut de plusieurs personnes. Some of our friends want to say that Elohim is a plural word. Yes, it is. Elohim, c'est un nom pluriel, oui, c'est vrai. But it is not plural of persons. Mais ce n'est pas le pluriel, it is the plural of attributes. Seulement des attributs. Yes. Amen. For us to understand God, pour nous de comprendre Dieu, we cannot understand God in any way as Elohim. Pas comme Elohim. He has to tell us. Il doit nous le dire. He has to show us. Il doit nous montrer cela. He has to speak the language that we understand. Et il doit nous parler dans le langage dont nous parlons. He has to show things that we can see with these eyes and hear with these ears. Nous montrer des choses que nous ne pouvons pas voir avec les yeux et les oreilles humaines. Because He has created us like Parce qu'il nous a créés. When He was creating us, quand il nous créait, He knew how He must create us. Et il savait comment nous créer. Otherwise, He would have left Adam and Eve as a spirit. Ah, si ce n'était pas le cas, il pouvait laisser Adam et Ève. He made a physical world. Ah, il les a formés dans la forme physique. Everything was looking physical when the creation happened. Chaque chose était dans la forme physique quand ils ont été créés. So man should also look physical. Et l'homme doit être aussi physique. So although He created, as brother was saying, before He created and formed us, He made everything for us. Avant qu'il nous crée dans la forme physique, il avait déjà préparé toutes choses pour nous. The first thing He did was He separated il avait séparé the light and the darkness. La lumière et les ténèbres. There was all darkness everywhere. Il y avait que les ténèbres partout. The Bible says the darkness was on the face La of the Bible deep. dit qu'il y avait que les ténèbres. And God Sur toute la separated surface de la terre. the light Et from the Dieu a darkness. séparé la lumière avec les ténèbres. And what was that light? Et qu'est-ce que c'était cette lumière? God is the light. Dieu est la lumière. In the physical sense, there happened Dans that. le sens physique, In the spiritual realm, dans le spirituel, God separated the darkness from our life. Dieu avait séparé les ténèbres avec notre vie. So He has given us the spiritual light. Il nous a donné la lumière spirituelle. Because God is the light. Parce que Dieu lui-même est la lumière. And His word is the light. Et sa parole est la lumière. And when we receive this light, Et quand nous avons reçu cette lumière, we must reflect this nous light. devons refléter cette lumière. That's why He says, C'est pourquoi il a dit, God is light. Dieu est lumière. Thy word is the lamp for my feet. Et ta parole est la lampe pour And mes the job pieds. of the lamp is to show light. Et le travail de la lampe, c'est pour donner la lumière.
A single lamp in the darkness can show a lot of light. Et puis seulement une seule lampe au milieu du ténèbre peut amener la lumière. People who think they are blind, they can see because of this light. Et les gens peuvent penser qu'ils sont aveugles, c'est à cause de cette So lumière. we who have received the light, the spiritual light of the Word of God, aussi la lumière de la révélation de la parole de Dieu. we have received it, we must reflect. Nous avons reçu cela et nous devons refléter cela. Moon has no light on its own. La lune n'a pas sa propre lumière. It is a dead rock. C'est comme une pierre morte. People, when we were small, we used to have many stories about the beauty of the moon. On avait beaucoup d'histoires concernant la beauté de la lune. Such a beautiful thing to look at. Quelque chose de beau de voir, de belles choses de voir. Quoi. But when we grew and learned Quand few nous avons more things, grandi et nous avons appris d'autres choses. we came to know this is only a piece of rock. Et nous avons compris que c'était seulement une pièce de pierre. There is no beauty in it. Il n'y a pas de beauté dans ça. We are a piece of ground. Nous sommes seulement une pièce de terre. There is no beauty in us. Il n'y a pas de beauté en nous. We become beautiful Nous devenons beaux, belles. when we draw the light from the sun. Quand nous attirons la lumière du soleil, Not S-U-N sun, sorry, not S-U-N sun, the sun. S-U-N, pas sun, comme le S-I-N, comme pas le soleil, but from S-O-N sun, mais le soleil. the Son of God. Nous sommes devenus des fils de Dieu So we receive that light. et nous avons reçu cette lumière. God has already got a type and the antitype in the whole Et Bible. Dieu avait déjà les types et les antitypes dans la Bible. What he did in the Old Ce Testament, qu'il avait fait dans l'Ancien Testament, it was the shadow of what he's going to do under the New c'était l'ombre Testament. des choses qu'il devait faire dans le Nouveau. So when he made man, Quand il a créé l'homme, he made man il a in the créé spiritual form l'homme dans la forme spirituelle to disclose his attributes on pour us. que Dieu puisse montrer ses attributs à nous. But there was no sin when man was in the spirit form. Mais il n'y avait pas encore de péché. Quand l'homme était dans la forme There was no sin spirituelle, il n'y avait pas de péché. because he was in the spirit form. Parce qu'il était dans la forme physique, dans la forme spirituelle, pardon. And he was in the image of God. Et il était l'image de Dieu. And God is spirit. Et Dieu est esprit. In the spirit form, he could Dans la not forme sin. spirituelle, il ne pouvait pas pécher. But God knew, Mais Dieu savait, as soon as I make him in aussi the form, longtemps, then the sin will happen. si je lui forme la chair, il va tomber dans les péchés. God knew this. Dieu savait ça. But why did God Et knowingly pourquoi, did this? et Dieu, pourquoi il a fait expressement? Because God's another attribute of Elohim was Parce que l'autre attribut d'Elohim to show était his love, de montrer son amour, to show his creation, de to show his montrer sa love, création et son amour, to show his sacrifice, et de montrer son to sacrifice, show his judgment, et de montrer son jugement, to show all his attributes to us. de manifester tous ses attributs à nous. If the man was yet in the spirit form, Si l'homme était toujours resté dans la forme then spirituelle, how would God say, okay, you eat and multiply and be et happy in this world, I've mangez et created everything for you. multipliez-vous, et j'ai créé toutes choses pour vous. How will spirit do Et everything? comment est-ce que l'esprit allait faire toutes ces choses? There has to be a form. Et il devait avoir une The forme. world before human being was already in a physical form. La parole déjà avant la création était déjà dans la forme physique. The birds and animals and the trees and the plants and fruits were in physical form. Toutes la création, les oiseaux, les animaux, les arbres, toutes ces choses. Earth, étaient déjà dans la everything forme that physique. earth and sky had was a physical form. Et tout le ciel, la terre étaient déjà dans la forme physique. So God must complete his law. Et Dieu devait compléter sa loi, Knowing that this man is going to fall sachant que l'homme allait tomber under his permissible will, dans sa volonté he permissive. allowed that to Il a happen. permis cela. Why does God have his permissible will? Why does he Et keep his pourquoi est-ce que permissible will? Dieu a cette permission permissive, de cette volonté permissive en lui, So that we should be able to appreciate pour his que glory. nous soyons à mesure d'apprécier sa gloire. If the Spirit says from heavens, Et si l'Esprit était resté au ciel, I love you, et disant seulement je vous aime, I will die for you, je mourrai pour vous,
we won't even understand what On he's n'allait talking about. même pas comprendre de quoi il parlait. The Lord used to say to the people, Et Dieu disait aux gens, I talk to you the things of this world, je vous ai enseigné les and choses you de ce don't monde understand this. et vous ne comprenez pas This cela. is like a parable for you. Et tout ça, c'est comme un parabole pour And if vous. I talk to you the Et things si of maintenant heaven, je vais vous parler des choses du ciel, what will you understand? vous n'allez rien comprendre. So he had to come down to our C'est level pourquoi il est descendu à notre niveau so that we can be raised to his pour level. que nous puissions être élevés à son niveau. Whereas because he is God, Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. all those who are in his program, Et tous ceux qui sont dans son programme, they were already with him. ils seront avec lui. But he sent them into this world Mais il les a manifestés dans ce so monde. that when we come in this world in the time dimension, Non, dans la dimension du temps dans ce monde. then we should be able to reflect that light to the Donc world. maintenant, nous allons être en mesure de refléter There are sa very few lumière who will dans le reflect monde. that light, Et il y aura seulement peu qui vont refléter cette but they lumière. have to be here. Mais il devait être ici, sur la terre. So when man became a living soul, Et quand l'homme est devenu une âme vivante, under the permissible will, sous la volonté permissive de God Dieu, allowed devil to operate. Dieu a permis au diable de travailler, Like d'opérer. under the permissible will, Mais sous la volonté permissive, God allowed Dieu a permis devil to operate on the family of Job and his family. puisse même travailler dans la famille de Job. That was not the absolute will of Ce God. n'était pas la volonté absolue de Under Dieu. the absolute will of God, Mais God sous does not la want anyone volonté to go to hell. absolue de Dieu, Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. He did not create hell for us. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Bible says he La created Bible hell dit for the qu'il a- fallen angels. Il avait créé l'enfer pour les anges déchus. Hell is not eternal. L'enfer n'est pas éternel. Hell was not existing in eternity. Et l'enfer n'existait pas dans Bible l'éternité. says hell has a beginning. La Bible dit que l'enfer a eu une commencement. So if the hell has a beginning, the hell will have an end. L'enfer a un commencement, ça veut dire que l'enfer aura aussi sa fin. There is only one type of eternity, that is God Almighty. Il y a seulement une forme d'éternité, c'est en Dieu lui-même. But why did God allow this? Et pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? So like we said, God allowed this in the family of Job. Et Dieu il a permis dans la famille de Job, Although the story of Job bien que l'histoire de Job, and book of Job dans le livre de Job, is still mystery to many. et c'est toujours un mystère pour beaucoup. It is still a mystery to most of us. Et c'est toujours aussi un mystère pour beaucoup d'entre We nous. only know one man called Job. Nous savons qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé We Job, know he had some boys and girls. et nous savons qu'il avait des fils He et had des a lot of filles. money and property and Il avait happiness, and he had one beaucoup wife. d'argent, beaucoup de propriétés, et il était riche. But can anybody find from which genealogy Et Job came from? quelqu'un peut trouver dans quelle généalogie Job était sorti? We find the genealogy of everybody in the Nous Bible. pouvons voir la généalogie de tout et chacun dans la Bible. Can we find the genealogy of Job? Pouvons-nous trouver la généalogie de Job? We don't know in which era, Nous in ne which savons age. pas dans quel Job âge Job a existé. Who was the father of Job? Qui était le père de Job? Who was the mother of Job? Qui était la mère de Job? Who was the grandfather of Qui Job? était le grand-père de Job? Nobody knows. Personne ne le sait. But we are not worried for that. Mais nous nous inquiétons pas. God de has cela. given us Dieu nous a donné a lesson from the life of Job, la leçon dans la vie de Job. and we must just take that. Et nous devons croire cela. If we try to find out Et si nous essayons de trouver, when it all happened, et quand est-ce que toutes ces choses ont we know in the lieu, conversation with Job. nous pouvons voir dans la conversation When we de read the Job, book of Job, I'm not Quand going to vous take much lisez- time, only 5 minutes, dans les livres de Job, j'ai pas because beaucoup this de temps, subject is related to parce that. que ce sujet est lié à ça. So we wish to talk about it. Et nous parlons de cela. God has an encounter, Dieu and God is in communication with devil était en communication avec le diable. in the book of Job's beginning. Dans les The beginning livres of de the Job. Job, au chapitre 1, 2, Then God is in communication with Job. Dieu était en communication avec Job. Job is in communication with his friends. Et Job était en communication avec ses amis. Now these all communications are mentioned in the book of Et Job. toutes ces communications, c'est écrit dans le livre. de But Job. it starts
Mais au commencement, when there is a conversation going on, debate going on between the devil and God, quand la conversation entre Dieu et the whole Dieu, subject starts from there. et c'est le sujet commence par là. But in which year of BC or AD it happened? Mais dans quel âge, dans quel temps, on ne sait pas. Did it happen before Moses? Est-ce que c'est là il y avant Did Moïse? it happen before Abraham or Est-ce que after c'est là Abraham? il y avait avant Abraham ou après Abraham? When did it happen? Quand est-ce que c'est là Did it happen after Adam? Est-ce que c'est là il y est après Adam? In which sequence can you fit Dans the quelle book of God? séquence nous pouvons placer le livre de Job? Possibly not. Possiblement non. How much we work, we can make stories, but we cannot Même find si that. nous essayons à faire comment, on n'arrivera pas. But God has given us the Mais book of Dieu Job. nous a donné le livre de Job. Why? Pourquoi? God wants to express Himself through that. Dieu voulait s'exprimer lui-même à travers des God expressed His creative power through the creation. Dieu expresse toujours son pouvoir de la création. dans le monde. God expressed His love for the fallen man by giving Dieu a expresse sacrifice for us. toujours, amen, son amour au monde par le sacrifice. God qu'il a expressed a montré. way for our redemption. Dieu nous montre cela par la rédemption. God has given us everything in Dieu this book nous a donné tout dans ces livres. that relates for us to go to eternal Et life. cela est lié à nous tous pour aller dans la vie Whatever éternelle. is not given in this, Tout ce qui n'est pas donné ici dans we ces just livres, leave it alone. nous le laissons. Whatever is given, Tout ce qui a été we donné, should take that. nous devons prendre We cela. don't know what was God doing before He created the Nous ne world. savons pas qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer What le was I monde. doing before God, Quand- before I came here? Avant que ce que je faisais avant que je vienne ici. Many times we think, what will I do after the new heaven and new earth? What life I will be living? Sorry, brother. What type of life À we will quel be genre de living vie on pouvait after avoir the new heaven and the new earth? après le nouveau ciel et la nouvelle terre sera créée. Out of human intelligence, we ask this question. Selon l'homme, mais nous pouvons poser And we tous ces ask genres de questions. sometimes the pastors and the elders, please tell us what will be Et there, what will nous be pouvons there. demander aux serviteurs de Dieu, dis-nous, qu'est-ce qui sera là-bas? The wisdom of God says, La sagesse de Dieu dit, when you go there, you will come to know. Amen, quand vous arriverez là-bas, vous saurez. Don't worry about it. Ne vous inquiétez de rien. And keep yourself ready to go there. Amen, soyez prêts pour aller là-bas. We are more worried for that, Nous sommes beaucoup plus inquiétés de ça, for which probably we are not even ready. parce que nous ne sommes pas encore prêts. This is the fruit of the knowledge of good and evil. Ceci est le fruit de la connaissance du bien et du We mal. are still eating today. Nous mangeons cela We encore. want to get too much knowledge. Nous voulons avoir beaucoup de connaissances. We want to get that knowledge which Nous God voulons was avoir not cette willing to give connaissance us. que Dieu n'a pas voulu nous donner. We are worried about the seven thunders. Nous nous inquiétons en ce qui concerne les We are sept worried tonnerres. about from where Cain got his wife. Et nous voulons savoir aussi où est-ce que Caïn a eu sa femme. We think we are so intelligent. Nous pensons que nous sommes tellement intelligents We can pick and choose on the qu'on mistakes of peut God. toucher et puis trouver les erreurs de Dieu. Can we think how silly we are? Amen. Est-ce que nous pouvons penser combien How nous foolish sommes, we are. combien fous et We forts are nous asking sommes. questions to our Creator. Et nous posons des questions à notre Créateur. We are the clay. Nous sommes l'argile. We should be soft. Nous devons être, We Amen. should surrender. Nous devons nous abandonner à Make me what you want. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Not that I desire to be made like Parce this, you que make je me like this. désire d'être comme ça et fais-moi comme ça. I am the clay, you are Je the suis potter. l'argile, toi tu es le potier. Make me what you want. Fais de moi ce que tu veux. If I become hard, Et si je deviens dur, then he is going to leave me. alors il va m'abandonner. He said, I don't want to handle you. Et je ne sais pas comment. You are already something what you want to be. Sois ce que toi tu veux. You don't need me. Tu n'as pas besoin de moi. So we are not worried Nous inquiétons for pas what God has not given us. pour ce que Dieu nous a pas But donné. we thank God Mais nous remercions what He Dieu has given de us. ce qu'il nous a We donné. believe it as it Nous is. le croyons comme cela est. Believe it as it is written. Seulement croyez cela comme cela And est if we need écrit. more than that, God will reveal it. Et si nous avons besoin de plus, Many Dieu va things nous le are révéler. straightforward. Et beaucoup de choses sont claires, But many things we don't seem straightforward. mais beaucoup de choses que nous ne voyons pas, When we cela take est it by clair. faith, Si nous le prenons par la foi, He will reveal it. Dieu va nous le He révéler. will manifest.
Et il va manifester cela. If Mary did not receive the word from Et Gabriel, si Marie n'avait pas reçu la parole de Gabriel, she would be wondering how this is going to happen. et il pouvait être là en train seulement de penser, mais The comment idea cela is very va nice. aller? L'idée était bien, Idea looks very good, l'idée, ça semble être bon, but this has never happened. mais cela ne pouvait pas arriver. How will it happen to me? Et comment est-ce que cela m'arrivera-t-il? How I can be a mother Comment without a est-ce que je man? serai une mère sans un homme? She believed it. Elle avait seulement cru. We may think, how will this happen? Et nous pouvons penser, comment est-ce que cela How will est? this happen? This body will get a new body. Comment est-ce que ce corps aura un corps nouveau? How will this happen in twinkling of an eye? Comment est-ce que cela prendra place en un clin d'œil? Leave it to God. Laissez tout cela à We Dieu. just believe it. Laissons seulement et We croyons seulement. receive Nous recevons as per our belief. seulement par rapport à notre foi. Our reward is in proportion to our belief. Amen. Notre récompense est liée à Even our notre healing foi. comes because of our faith. Et si même nous pouvons expérimenter la guérison, c'est par God rapport à releases notre the foi. healing and revelation Dieu according to our envoie la faith. guérison et par rapport toujours à notre foi. Our faith doesn't come from head, Et notre foi ne vient pas de la tête, it comes from heart. mais du cœur. We should love God with our heart, Nous not devons with our aimer brain. Dieu par notre cœur et The non brain will notre take us tête. away from God. Et la tête va nous amener loin de Dieu. So likewise, when he gave this De la même situation manière, of Job, quand il nous présente cette situation de Job, and the whole description is et there, toute la description est là, as if devil is trying to challenge le diable essayait de défier Dieu. God, Amen. as if he's trying to challenge Et God comme ils essayaient de défier Dieu regarding his servant, Concernant- regarding his man Job. et concernant cet homme de Job, And he's trying to taunt God. et il tentait Dieu, You do all this to him. et tu lui as fait beaucoup de bien. That's why he's worshipping C'est you. pourquoi il t'adore. Devil is always worried about physical things. Mais le diable s'inquiète toujours des choses physiques. Many times, many Beaucoup de of our fois, brethren, Christian brethren, beaucoup de nos frères chrétiens, they look at their children. Look at their children. vous voyez, regardez seulement les Look enfants. at big jobs they have. Vous voyez le travail qu'ils ont. Look at that, how handsome they look. Et voyez comment ils sont. Their big houses, big jobs, Des big cars. grandes maisons, des belles voitures. They are surely blessed by God. Et ils sont bénis par Dieu. Just this much information is not enough to prove. Et cela ne prouve pas vraiment que c'est Dieu. This is the idea of devil. Ceci est l'idée du diable. We know all life, all blessing come from God. Nous savons que toute la vie et toutes les bénédictions viennent de Dieu. But devil uses those blessings to test God. Mais Dieu utilise toutes ces bénédictions pour tenter. That is why he's telling God, C'est pourquoi il disait à Job, have you ever thought of that fellow? Amen, tu as déjà pensé à You say you are proud of him. et tu sais que tu es fier de lui. Why you are proud of him? Because you've Pourquoi given him tu es fier everything. de lui? Parce que tu lui as donné tout. I challenge you, Je te défie. take everything away Prends seulement tout ce bien que tu and lui as see donné if he is still your man. et voyez après s'il sera toujours ton homme. God knew Job Dieu connaissait Job before even he made Job. avant même de créer Job. This man will always Cet keep homme- me first. Amen, restera fidèle à moi. He says to devil, Il a dit au diable, go and do everything you want to do. va et faire tout ce que tu veux. I will not allow you to touch his Je ne life. te permettrai pas de toucher sa vie. But I will allow you to touch the life of his children, Mais je all te his things, permettrai all de his toucher birds, la all vie de his ses animals. enfants, ses animaux, tous ses biens. You can play with their life. Tu peux jouer avec leur vie. Because the physical death Parce que la mort physique can happen because of the peut devil. arriver à cause du diable. We are all dying physically because of the Nous sin, mourons tous physiquement à cause du péché. because of that fruit, À cause du fruit which is death. qui est la Fruit mort. of devil is death, Mais le fruit du diable, c'est la mort. but fruit of spirit is eternal life. Mais le fruit de l'esprit est la vie He éternelle. says, devil, you came to Il a challenge me, dit- I challenge you. Et tu es venu pour me tenter. Moi, si je t'ai Go and dit, finish everything. va et fais tout ce que tu veux. And we know everything Et happened. nous savons tout ce qui était arrivé. Who was left? C'est ce qui est resté. Only Job is left. Seulement Job était là. And his wife is left. Et sa femme. Now the question comes Et sometimes, maintenant, la question vient.
Why God allowed his wife to live? Pourquoi est-ce que Dieu avait permis que sa femme reste en vie? Because God had a purpose in Parce that. que Dieu avait un plan avec She elle. has to speak one day as an unbeliever woman. Elle devait parler un jour comme une femme incroyante. Like Eve spoke like an De la unbeliever woman même to the man. manière comme elle avait parlé à cet homme So if everybody was dead, incroyant, il n'y avait personne qui était là. who will tell him this? Et même qui allait lui dire ça? And as a human being, En tant qu'humain, his wife was flesh of his flesh and bone sa of his femme bones. était la chair de sa chair et les os de ses os physiquement. So he must listen to his wife. Et il devait écouter à sa femme. Because he should be loving his wife. Et il devait aimer sa femme. Like Adam used to love Eve. Comme Adam aimait Ève. He listened to her. Et il a écouté. And we all know what happened. Et nous savons qu'est-ce qui était arrivé après. That was not in the plan of absolute will of God. Cela n'était pas dans la It happened volonté in the permissible will of absolue de God. Dieu, mais cela était dans la volonté Because permissible. God wanted to prove Parce something. que Dieu voulait prouver quelque chose. So then, Et après, when everything was finished, quand tout était fini, his own friends came to condemn him. et ses amis sont venus They pour said, le we will do condamner. some offerings for your Et sake, nous allons donner des offrandes pour so toi. that God will have mercy and Pour forgive your que sins. Dieu puisse avoir pitié de toi et pardonner Because tes your péchés. confidence and secret sins are there, you don't talk to us. Et beaucoup, peut-être que tu as beaucoup But we de can see secrets, des this choses que tu happening ne dis because pas. of that. Tu ne dis pas, mais nous savons que toutes ces choses t'arrivent parce que tu as péché. But Job was the man of God. Mais Job était un homme de Dieu. His heart was with God. Et son cœur était avec Dieu. When everything was destroyed, Quand tout était détruit, his skin also became bad. He had sickness on même his son skin. corps, même sa chair, sa peau était détruite. He was living like a very wretched Il person. vivait vraiment comme un homme misérable. Probably nobody wanted to come near to him. Probablement, peut-être personne ne voulait venir à lui Even encore. his wife did not want to Même face sa him. femme ne voulait même plus le toucher, She said, de le servir. curse your God and die. Et la femme a dit à son mari, Because maudit Dieu même. I don't want to see a man like Parce you. que moi, je ne veux pas voir un homme comme You're a toi, worthless man inutile comme toi. and worthless God. Amen. Un indigne Dieu aussi. Forget both. I'm both against both of them. Même, elle était contre Dieu et même contre Job. She spoke like a perfect unbeliever. Elle parlait comme une vraie incroyante. We are not condemning a sister here. Et nous ne condamnons pas une sœur ici. We are not condemning a woman here. Nous ne condamnons pas une femme ici. There is a lesson in this. Mais il y a une leçon dans ça. God has got in His church, in His bride, both brothers and sisters. Both are the Dieu a part of His bride. placé Amen, les sœurs et les frères dans l'église, dans son église. God is Son frère only et trying sœur. to differentiate between a believer and an Dieu unbeliever. essaie seulement de démontrer qu'il y a des croyants et des incroyants. And God has shown from the book of Et Genesis Dieu a montré déjà dans le livre de Genèse that a woman qu'une femme, is not the original creation. elle n'était pas dans la création originale de Dieu. God created everything in pairs. Dieu avait Male, female, créé male, chaque female, chose male, deux, mâle, femelle, mâle, femelle. Why did He not make original human being also as pair? Et pourquoi il n'avait pas créé encore Why did He not make the man and the woman as original pair? pourquoi il n'avait pas fait que l'homme et la femme soient dans la création originelle? Because it is the type of the bride and the bridegroom of the New Testament. Parce qu'il devait être le type, amen, de l'époux et de l'épouse de la nouvelle alliance. The man, L'homme, bridegroom, amen, l'époux the woman, the et bride, la femme must amen, be inside the l'épouse bridegroom first. devait d'abord exister dans l'époux. And that was the antitype, the type is in the New Et Testament. c'était l'antitype, et maintenant le type c'est So the bride of dans le Christ, Nouveau. bride of Christ, L'épouse de Christ, came out from the bridegroom. et elle sort de l'époux. So the woman came from the man. Amen. La femme est sortie de l'homme. And because she was not originally Et created, comme elle n'était pas dans la création originelle, she was always a weak person. elle était toujours une personne faible. She was not as strong as the man. Et elle n'était pas aussi forte que She was l'homme. Brother Branham's one message says she's the byproduct. Amen. Le frère Branham Something dit which c'est is comme taken out from the main un thing. produit qui est sorti d'un autre produit. So she is a part of that main thing. Elle était seulement une partie de cette chose A qui était sortie. percentage of the whole. C'était le pourcentage du tout.
So devil attempted her. Et les diables pouvaient la tenter. So similarly here Job was De la loving même his manière wife, ici, because he is the Job wife. et sa femme, but at the same time that wife is not loving him anymore. au même moment, cette femme ne l'aimait plus. She says, you must die now. Et elle a dit, tu dois mourir maintenant. And he told her, you talk like an unbelieving woman. Et Job l'a dit, tu parles comme une femme He insensée. did not behave like Adam. Je ne vais Come, pas I will also me eat comporter comme because Adam. I love you. Viens, parce que je t'aime. And then the result we know what happened. Et nous savons les résultats, ce qui était passé avec He Adam says et no. Ève. Mais Job a dit non. My God is my priority. Et mon Dieu est ma priorité. Don't talk like an unbelieving Ne woman. parle pas comme une femme If insensée. he believed her, Si elle croyait ça, if he cursed God, et si Job avait maudit son Surely. Dieu, sûrement, Job will die. Job allait mourir. But why did he live? Et pourquoi il était resté He vivant? wanted to put God first. Parce que Job avait d'abord mis Dieu à sa He did not agree with the première woman. position. Il n'a pas écouté sa femme. He did not agree with the product which came from him. Et il n'a pas laissé que ces produits qui sont sortis d'elle puissent les convaincre. He put God first. Mais Job avait mis Dieu d'abord He dans la says, première I know position. my God Il lives, sait, je sais que mon Dieu est vivant. and I will see my God in Et the same body. je verrai mon Dieu dans le même corps. This was the faith. C'est ça était This la was the foi. priority. Ça était la priorité. We don't know who Job is. Nous ne savons pas qui est Job. We don't know when he was born, where he Nous ne was savons born. pas quand il était né. We don't know what was the name of his father, Nous mother, ne and savons children. pas quel était le nom de son père, sa mère. To us, he looks like an unlikely person, Mais pour nous, peut-être c'était un homme qu'on ne pouvait pas but he is in admirer. the Bible. Mais il est dans la Bible. Every description God has given Et us. chaque description que Dieu It's so nous a real. donnée dans la Bible était réelle. So we don't run after to find out from history and geography. Nous Oh, let us find n'essayons out pas more about d'aller Job. trouver ça dans l'histoire ou la géographie et là où Job était. But we just want to believe. Mais nous voulons seulement croire. We take the lesson God wants to give us. Nous prenons la leçon que Dieu nous donne. This is the purpose God gave us that book. Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a donné Put ce me livre. first. Dieu a dit, mets-moi en première position. Even before things of the world, put me first. Avant même les choses du monde, mets-moi en première position. God knew this will happen. Dieu savait que cela allait So he arriver. told devil, Et il a dit au diable, go and do what you want. va et faire tout ce que tu veux. I permit you. Je te permets. Devil was permitted Et le diable avait été permis de faire for ce glory of God. pour la gloire de Dieu. Many times things are permitted in our life. Des fois, des choses arrivent dans nos We vies. don't curse God because Nous of ne that. maudissons pas Dieu à cause de ça. But why you made me like Et this? pourquoi Dieu tu m'as fait, Why tu m'as this fait is comme ça? happening to me? Pourquoi cela Why my m'arrive? child is like this? Pourquoi est-ce que mon Why enfant my est comme wife is ça? like this? Pourquoi est-ce que ma femme est comme Why ça? my life is like Pourquoi this? est-ce que ma vie est comme ça? No. Non. God, you are my God. Dieu, tu es mon Dieu. You know Tu sais that all things will work good for me. que toutes choses If I travaillent love bien si je t'aime. Not only few things, Pas seulement quelque but chose, all things. mais dans toutes choses. They may look good, bad, and Et ils ugly, peuvent être bien ou mauvais, but the end result mais le résultat final, is happiness. Amen, c'est la And joie. when et God, le when bonheur. God lived with that, Et si Dieu fait cela, He testified that et quand Dieu in front of his cela, wife, et devant sa femme, in front of God, devant Dieu, in front of his friends, devant ses amis, God said, now the job is Dieu done. a dit, non, maintenant Job, I will repay this man je according to his vais faith. repayer cet homme par rapport à sa foi. God returned everything he Et lost. Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. We are not worried who Job is, Nous inquiétons pas from qui which était year he is Job, born, which ou year he dans quelle died, année il était né, why this book où il is était given to mort. us. Et c'est là. We pourquoi only cela know nous a this été is donné. given Nous savons que cela nous était so donné that we learn this lesson pour que nous puissions and apprendre we de make our character and faith mettre like cette Job. leçon et avoir ce caractère de Job. This is for us to learn. Ça, c'est pour nous, pour apprendre. God does everything for his glory, Dieu fait toutes choses pour sa not gloire, to glorify devil. pour glorifier Dieu. Devil was thoroughly insulted. Amen. Et le diable était And incertain. same insult devil faced on cross. Et de la même manière, il était aussi When incertain Jesus ce qui s'est overcame passé death. à la croix.
And when we become overcome through Jesus Et quand Christ, nous devenons des vainqueurs au travers de the Jésus, Bible says we are more la than Bible dit que nous overcomers. sommes plus que vainqueurs. By Golgotha, we are Par more celui than qui nous a overcomers. aimés. Amen. So may God bless us. Et que le Seigneur nous May bénisse, God help us. que le Seigneur nous aide, All things which are given here et tout ce qui nous a été donné for ici our edification. pour notre édification. And we thank God that Et we nous could be in remercions the Dieu, fellowship nous together. sommes dans la communion The ensemble. Lord has spoken to us Et from His le word. Seigneur nous a parlé par sa We thank parole. God for our brother Jaswinder and Nous his family. remercions notre frère Jasmine et That sa we could be famille together in this fellowship. et que Dieu a permis pour que We nous always soyons long for ensemble it, dans we la always long communion. for it, we always pray for it. Et nous prions toujours pour cela. And God knows still He wants to keep us here. Et Dieu sait pourquoi On il this nous a earth. ici sur cette terre. We will continue to Nous allons meet. continuer de As nous Hebrews 10:25 rassembler says, comme Hébreux. Hebrews 10:25 says, 10, 25. encourage each other Nous devons nous encourager les uns and les do autres not forsake assembling et de together. ne pas abandonner nos rassemblements. As you see the day coming, Quand vous voyez le jour arriver, as you see the day of return quand vous coming, voyez le jour du retour du Seigneur meet arriver, more and more. et rassemblez-vous. If you can't de plus en meet plus. physically, speak. Et quand Speak nous on ne phone. pouvons pas nous voir physiquement, Speak parlons on au any other téléphone platform. et dans d'autres But whenever plateformes. possible, Et si cela est possible, whenever possible, work hard travailler to dur meet in person. pour que nous puissions être Personal ensemble fellowship. physiquement. It's very, very important. C'est vraiment important. May God bless us, Que le Seigneur nous brothers bénisse, and sisters. frères et I sœurs. hand over to brother. Amen. God bless you. God bless you. Amen. Thank you. God bless you, brother. We're so blessed. Amen. Que Dieu soit loué. Some believe. Que Dieu soit loué. Praise. Nous allons lire une écriture et puis nous We are allons going finir. to read a scripture. Et tout ce que les frères viennent nous dire, All that the brother just said c'était tellement merveilleux. was wonderful. Des paroles de vie. Those were words of life. Amen. Amen. Et cela nous est salutaire. And this is for our salvation. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 17, We're going to read John 17, verset 14. from verse 14. On lit ensemble, ma sœur, à cause du temps. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, Amen. comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. I've given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I Amen. pray not that they should take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, verset 17. Verse 17. Ta parole est la vérité. Sanctify them through thy word. Thy word is truth. Comme tu m'as envoyé dans le monde, As thou hast sent me the world, je les ai aussi envoyés dans le so monde. have I sent them. Et je me sanctifie moi-même pour eux, And for their sake I sanctify afin myself, qu'eux aussi soient that sanctifiés they par la also may vérité. be sanctified through the truth. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, And I pray I for this alone, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. which have believed on me through their words. Amen. Comme le frère vient nous parler, As the brother just said, ils nous ont parlé du Seigneur. they have spoken to Ils us nous ont parlé of de the notre Lord. Dieu. They have spoken of our Et si nous Lord. croyons cela, And if we believe nous this, sommes des bienheureux. we are the most blessed people. Yes. Verset 21. Verse 21. Afin que tous soient un. Les buts. That they may all be one, as Les buts the end de cet évangile éternel, of this eternal c'est gospel pour que nous soyons un. is that we become one, Comme les frères le disaient aussi bien. as the brother was saying also. Comme toi, Père, As thou, tu es en Father, moi
art in me, et comme je suis en toi, and I in thee, afin que eux aussi soient un en nous, that they also may be one in us, pour que le monde croie that the world may que believe tu m'as envoyé. that thou hast sent me. Je leur ai donné la gloire que And tu the m'as glory donnée, which thou givest me, afin qu'ils soient un, I've given them, comme nous sommes that they un. may be one as Moi en eux, we are one. moi en eux, In them, et toi en moi, and thou afin in qu'ils me, soient that parfaitement they may un. be made perfect, Et que in le one, monde and connaisse that the world may que know tu m'as that envoyé thou hast sent me. et que tu les as aimés Love them comme tu m'as as aimé. thou hast loved me. Que Dieu soit loué. God be praised. Dieu nous a aimés God have et loved Dieu us. nous a fait sa grâce And God have given et il nous us a grace. manifesté sa And miséricorde. He has manifested His mercy. Comme mon frère to us. Jasmine a dit au début, As our brother Jaswin was c'est saying, que nous sommes ici là, what we are here c'est vraiment la grâce de Dieu. is the grace of God. Chacun est né Each one was born en Afrique, in Africa, en Inde, in India, en Chine, in China, en Europe, in Europe, partout dans le monde. wherever in the world, Mais all over. voyez-vous But vous-même see, look ce for que Dieu a yourself. fait What God have done par son esprit. through His Spirit. Il nous a tous unis. He have united us, Et nous sommes devenus fils et and filles de we Dieu. have become Amen. sons and daughters of God. Quelle merveille de Dieu. What Amen. wonderful C'est God! ça ce que nous chantons. This is what we say. Amazing grace. Amazing grace. Que Amen. Dieu soit loué. God be Que praised. Dieu bénisse chaque parole That God will bless each qui word venait de sortir de la bouche de ses serviteurs. out from the mouth of His servants. Que Dieu soit loué. God Nous